वेस्ट जोन में हमारे डीसीपी साहब और हमारे साइबर क्राइम डीसीपी साहब और एसीपीस एंड ऑल ऑफिसर्स यहाँ पर बड़े पैमाने पे पब्लिक को गैदर करके, स्टूडेंट्स को, बड़े लोगों को, लेडीज़ को, अंदर सब लोगों को यहाँ पर गैदर करके साइबर क्राइम कैसा हो रहा, साइबर क्राइम के कैसे बचना है, साइबर क्राइम में कैसा फ्रॉड्स हो रहा है, आपका पैसे कैसे लूट ले रहे हैं साइबर फ्रॉडस्टर्स, साइबर क्रिमिनल्स ऐसा लूट ले रहे बोल के, ऐसा यहाँ पर उनको अवेयरनेस करने के लिए, वाकिफ़ कराने के लिए यहाँ पर बहुत मौजूद है। यहाँ पर इसमें एक कैंपेन स्टार्ट करें साइबर सिम्बा बोल के। ये जो भी साइबर सिम्बा ज्वाइन हो के, वो लोग वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, ये वॉलंटरी जाने हो के आपको, दूसरों को, भाइयों को, ब्रदरों, घर वालों को, फ्रेंड्स को यहाँ पर साइबर क्या क्राइम्स कैसा चल रहा, तुम आप अवेयरनेस करना चाहिए। इसके सिलसिले में जो भी आए यहाँ पर पब्लिक आए, उनको शुक्रगुजार कर रहा हूँ मैं। ये मैसेज ऐसा जाना है हमारे सीपी साहब जो भी करें यहाँ पर शुरू करें हमारा डीजीपी साहब, और ये मैसेज पूरा पब्लिक को, हैदराबाद को जाना है, ये पूरा तेलंगाना में जाना है, पब्लिक पूरा इंडिया में जाना है, जाके ये साइबर फ्रॉड्स से वो बचना है। और कोई मैं 2-3 बोल रहा हूँ यहाँ पर, ये जो भी डिजिटल अरेस्ट बोल के तुम्हारे अरेस्ट कर रहा हूँ बोल के वीडियो कॉल की रहते हो, तुम मानना नहीं, डायरेक्ट पुलिस स्टेशन आके एप्लीकेशन दर्ज कर दीजिए। और ये जो गैर एप्लीकेशन से डाउनलोड लिंक आए तो मत छूइए, उसको डिलीट कर दीजिए। और कोई गैर वाले तुम्हारे OTP बोले तो कोई SBI बोलता, कोई HDFC बोलता, कोई गवर्नमेंट फर्म बोलता, कोई भी माना नहीं, डायरेक्ट जाके वो ऑफिस को जाके पता कर लीजिए। और ये उसका जो आपका जो अकाउंट है, जो भी तुम्हारे 10,000 20,000 देते, 5,000 देते, अकाउंट दो, हमारे देने से क्या दिक्कत है, तुम्हारा पैसे आता ना बोले तो उस पर लालच में नहीं जाना है। अकाउंट दिए तो तुम भी गुनाहगार हो जाते, अकाउंट नहीं देना है। तुम्हारे अकाउंट पे वैसा तुम्हारे 10,000 दे के उन्हें 10 करोड़ डाल के तुम्हारे को गुनहगार कर दे रहा, उन्हें तो नहीं मिलता, मगर तुम तो पकड़े जाते। सो इसी वास्ते एक वही स्मार्टफोन से जो बहुत महफूज रहना चाहिए। थैंक यू। Pledge to be vigilant, pledge to be vigilant and responsible in the digital world. I will protect my passwords being shared with others. I will protect my passwords. I will not accept video calls from any unknown numbers and calls. I will not afraid of threatening calls such as called digital arrest. Instead, I will immediately report such incidents to the helpline numbers 1930 or 100. I will not open APK files, links. I will pause and think differently. I will promptly report. Thank you for joining for the program. Thank you. Now, signature campaign. No bank is there to give huge amounts of profit. Today, I'll show you. Last, false play to trading scam loses 14.6 crores. A dental surgeon lost 14.6 crores. That is there in the newspaper today. See, he was allured by one unknown app, one unknown company, which is not at all visible. How come a person believe the person which is receive some email or some app link and clicks it and he deposits money and he will get for 1,000 rupees. He will, तुम्हारा जो भी SMS को टच नहीं करना है। अकाउंट दे तो तुम भी जिम्मेदार होता, तुम भी जिम्मेदार होते। अकाउंट दिए तो तुम्हारा अकाउंट दूसरों को दिए तो, गैरों को दिए तो, रिश्तेदारों को दिए तो, और तुम देखो एक चेक में ब्लैंक साइड कर दिए, दे दिए,
वो चेक में 1 करोड़ रुपए लिख लिया। इसका मतलब क्या है? देखो तुम नहीं लिया ना, देखो बोल के बोल। लीगली तुम लॉस हो जाता, लीगली तुम पुलिस स्टेशन आने के बाद भी कुछ नहीं होगा। तुम्हारा अकाउंट दे दिए मेरे को, तुम्हारे पता ही नहीं, मैं इसमें ड्रग अमाउंट डाल दिया, डाल के उठा लिया। कौन किसका मैसेज रहता उसमें? तुम्हारा नाम रहता, तुम्हारा अकाउंट में ड्रग अमाउंट आया बोल के हमारे को कंप्लेंट आता। किसको पकड़ना भाई? बस इन्हें लिए वाले, उसका एविडेंस ही नहीं है, उसका गवाही नहीं है। किसको पकड़ना? मैं पुलिस ऑफिसर था, तुम्हारे को पकड़ता हूँ। तुम्हारे पे लीगल डॉक्यूमेंट है, ट्रांसफर तुम्हारे पास तुम्हारे अकाउंट में चलेगा। अकाउंट क्या है, किसका है? तुम्हारा है। पूरा ओटीपी तुम्हारा पाया, लीगली तुम मुजरिम हो जाते, कोर्ट में भी वो सबूत हो जाता, तुम्हारे को पनिशमेंट आया। तो इसीलिए किसी को अकाउंट देना नहीं। वो ये फोन में तुम वो उसको क्या बोलते हो, ये प्रोटेक्शन रख लेना। प्रोटेक्शन उसका स्क्रीन गार्ड नहीं, वो तुम्हारा सिक्योरिटी नंबर रख लेना, नहीं तो पैटर्न रख लेना। वो पैटर्न भी तुम्हारे को बहुत कॉम्प्लिकेटेड रख लेना। बाजू में रहते भी देख लेते तुम्हारा पैटर्न एक बार देख लेते तो तुम्हारा पूरा फोन पूरा ओपन। वो फोन चोरी करना और फोन बेच के सेकंड हैंड फोन लेना। आजकल फोन ज्यादा चोरी हो रहे, ये फोन ज्यादा चोरी होकर कहाँ जा रहे हैं? अफ्रीका को जा रहे हैं। अफ्रीका में बैठ रहे, दूसरे कंट्रीज में बैठ रहे, वियतनाम में बैठ रहे, दूसरा कंट्रीज में बैठ के वो कंप्यूटर का सर्वर पूरा वहां पर स्टार्ट कर रहे हैं। केस यहाँ पर हो रहा, उसका वापस से ऑपरेट हो रहा। हम जाके वो वियतनाम को जाके पकड़ना नहीं होता ना। वो कहीं भी साइबर स्पेस में हो तो इसका हमारा दुनिया की हमारा ब्रेन को अलग है पूरा। సో మీకు తెలుగులో మాట్లాడాలా, ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడాలా, ఉర్దూలో మాట్లాడాలా? సో అన్ని కలిపి మాట్లాడాలి। इस साइबर क्राइम प्रोग्राम के लिए जो भी अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए जो भी आए, बड़े छोटे और स्टूडेंट्स, लेडीज एंड जेंटलमैन एंड बॉयज एंड गर्ल्स एंड ऑल अदर, आई वेलकम यू ऑन दिस डायस टू मेक यू अवेयर ऑफ द साइबर क्राइम. This is the main crime which is going on every day in every person. Who is cyber? What is cyber crime? No one knows. Can anybody say what is cyber crime? Cyber crime is a crime, the person, the thief, the stealer is not visible. He enters in your phone, he enters in your laptop, he enters in your email, he enters in your apps and steals every data. He steals your the money which is available in your account. He steals your photographs. He steals the private information and blackmail you and steal your money. There are many types of cyber crimes. There are the posters, this fraud amount, the fraud crime. They will send to one location or they will send one file for all the unemployed youth. He will say that you apply for this and pay the money, only small amount of money, then you will get job. That is fraud. And once you apply it, once you click it, immediately your data will go on. Your data will be stolen and you will be blackmailed. And if you have the saving account or any other bank account, if that money is there inside in a bank account, everything will be vanished. And that person is not at all visible. And that money immediately goes to different accounts and it is impossible to get again. And especially the youth, they should be very, very aware because everyone is having now the cell phone, that too smartphone. In that smartphone, it is as easy, very beautiful invention made by the human being. It is an ultra modern instrument, in fact, but at the same time, it is very, very dangerous instrument in your hand. Suppose you guys, you people are continuously chatting with many people unknown. There are many fraudsters
with whom you are chatting, with whom you are sharing your videos, with whom you are sharing your images, with whom you are sharing your email IDs. Everything is they are going to steal and they will blackmail you. And they are also sending you some files. They are also sending you to make you to play video games and the online games and also the betting games. And by this, you are losing money. Some guys, some students, some boys, some youth, they have even stolen. They have become the thieves. They have stolen father's money, mother's money, and played with the video games. And ultimately, when they came to know, they committed suicide. There are many cases. Every day in Hyderabad, 10 to 15 cases are getting reported. And you know the money which is lost. We are losing Hyderabadis are. Commissioner of Police Crimes, Hyderabad, and colleague DCP Southwest Zone, Chandra Mohan, for organizing this program to put forward the initiative taken by our respected Commissioner of Police, DC Sajjana, IPS, Jagruti Hyderabad, and Surakshit Hyderabad. So the motive of this slogan is to make the public of Hyderabad to be aware of certain crimes that are taking place around us and also in the society. So prevention is better than cure. You all know that the concept prevention is better than cure. So the prevention part plays a key role where the civilized society go away from the crimes. So taking that motive as a strategy to control the crimes, especially related to cyber crimes. We all know that everybody is prone to cyber crime nowadays. Why? Anybody? We all Additional CP Crimes, Srinivasulu IPS sir, DCP Cyber Crime, Arvind Babu sir, my dear colleague Additional DCP Krishna Gaud garu, ACPs, Inspectors, SIs, and ఇక్కడికి విచ్చేసిన వాలంటీర్స్, అదేవిధంగా మీడియా మిత్రులకు అందరికి కూడా గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. ఇవాళ దీని థీమ్ మనందరికీ తెలుసు. అన్ని క్రైమ్స్ మాదిరిగానే సైబర్ క్రైమ్ కూడా ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ క్యూర్ అన్న పాలసీనే నడుస్తుంది. ఎందుకంటే సైబర్ క్రైమ్ అనేది ప్రివెన్షన్ చేయడం మిగతా వాటితోని పోల్చుకుంటే చాలా ఈజీ. సో దానికి గాను మన ముఖ్య అతిథిగా అడిషనల్ సిపి క్రైమ్స్ రావడం జరిగింది. ఈ సార్కు చాలా వాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. రామగుండం కమిషనర్ ఉన్నప్పుడు ఒక క్రైమ్ను స్టార్టింగ్ నుండి ఎండింగ్ వరకు ఎట్లా లాజికల్గా ఎండ్కి తీసుకురావాలన్నది గతంలో క్రైమ్ మీటింగ్లో సుపీరియర్ ఆఫీసర్స్, డీజీ ర్యాంక్ ఆఫీసర్స్ కూడా సార్ను ఆ ఎస్ఓపి ఫాలో అవ్వడం మెచ్చుకోవడం జరిగింది. కాబట్టి అంత పెద్ద ఆఫీసర్ మనకు వచ్చి ఇక్కడ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తున్నారు కాబట్టి మీరందరూ కూడా చాలా జాగ్రత్తగా పాటించాలి.